Assalamu alaikum. I am Ahmed Ali Naqvi, and in today's World in Focus with Ahmed Ali Naqvi, in this episode, we will talk about a very important issue, Taiwan crisis. नाज़रीन, ताइवान इशू जो है वो एक ब्रॉड ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें डिफरेंट एक्टर्स इन्वॉल्व हैं, बट प्राइमरी एक्टर्स आर द चाइनीज़ एंड द ताइवान इटसेल्फ, बट कुछ रीजनल स्टेट्स भी हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की इंगेजमेंट भी है इन द लास्ट अराउंड 5 decades. बट हम ब्रॉड इशू के साथ साथ रिसेंटली इन 2022 because of the US House Speaker, then House Speaker, Nancy Pelosi's visit to Taiwan, this also created a crisis on Taiwan, which is not unprecedented, but one of the most significant crises that Taiwan has in recent times. उस crisis को भी हम analyze करेंगे, but at the same time we will try to understand how this crisis fits into a broader problem of the Taiwan issue. तो नाज़रीन, इस एपिसोड में हम 2-3 चीज़ों पे बात करेंगे. हम बात करेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो ताइवान का इशू है इसकी नेचर क्या है, इस नेचर में चाइनीज़ के क्लेम क्या हैं, ताइवान का क्लेम क्या है, यूएस की पॉलिसीज़ क्या रही हैं हिस्टोरिकली, और फिर हम बात करेंगे रिसेंट जो मैंने कहा 2022 के अंदर विजिट हुआ हाउस स्पीकर का, वो विजिट क्यों हुआ, उस पर इंटरेस्ट क्या थे, हाउ चाइना रिस्पॉन्डेड टू इट, और इसकी पॉसिबल इम्प्लीकेशंस क्या हैं या क्या हो सकती हैं रीजन के लिए, ग्लोबल कम्युनिटी के लिए, इवन पाकिस्तान के लिए. तो नाजरीन, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ये नेचर ऑफ इशू क्या है, व्हाट इज़ द ताइवान इशू इटसेल्फ इन अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट. तो सबसे पहले हम चलते हैं जो चाइनीज़ पर्सपेक्टिव है वो क्या है ताइवान के हवाले से. चाइनीज़ क्लेम करते हैं दैट ताइवान इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ चाइना, बट अगर हम नाज़रीन हिस्टोरिकली देखें तो ये इशू स्टार्ट ही उस वक्त होता है जब चाइना के अंदर हम एक सोशलिस्ट मूवमेंट देखते हैं लेड बाय माओ ज़ेडुंग फ्रॉम द पार्टी विच इज़ कॉल्ड द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी. और 1940s में ये जो कम्युनिस्ट मूवमेंट है ये ओवरथ्रो कर लेती है उस वक्त की गवर्नमेंट को, जो कि नेशनलिस्ट की गवर्नमेंट कहलाती है, लेड बाय चिंग काई शेक. इस नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के बाद उसे डिफीट किया जाता है और वही नेशनलिस्ट जो हैं दे आर रिट्रीटेड टू दिस आइलैंड ऑफ ताइवान. मेनलैंड चाइना जो है इट कम्स अंडर द कम्युनिस्ट कंट्रोल. सिंस देन द चाइनीज स्टेट विच कंप्राइजेज ऑफ द चाइना, मेनलैंड चाइना एंड द ताइवान आइलैंड, यहाँ पे 2 डिफरेंट पैरेलल गवर्नमेंट्स बनती हैं. मेनलैंड चाइना जो कि मेजर पार्ट है उसका, वहाँ पे कम्युनिस्ट रूल करते हैं सिंस 1949, और जो ताइवान है वहाँ पे नेशनलिस्ट रूल करते हैं. इनिशियली ताइवान हैड अ नेशनलिस्ट अथॉरिटेरियन काइंड ऑफ गवर्नमेंट, बट लेटर ऑन सिंस 1970s ताइवान हैज़ ग्रेजुअली बिकम अ डेमोक्रेटिक स्टेट. तो चाइना क्लेम करता है दैट बिकॉज इट कंट्रोल्स द मेनलैंड चाइना एंड बिकॉज बिफोर द कम्युनिस्ट केम टू पावर इन चाइना द ताइवान वाज पार्ट ऑफ चाइना, so it shouldn't change much after communists came to power, and therefore Taiwan is an integral part of China, and they call it one China policy. Taiwan, on the other hand, agrees that yes, we are part of China, but historically जब हम late 40s और 50s की बात करें और 60s की बात करें, जो ताइवान क्लेम करता रहा, they claimed that communists have occupied the China, and they also agreed that there is one China, but they claimed themselves to be the legitimate representatives of China as a whole. So they also believed in one China policy. But in the last 2 decades or so, we have gradually seen the rise of a tendency in Taiwan, जहाँ पे public opinion भी और कुछ political groups जो हैं वो भी they are increasingly moving towards a free, independent and separate Taiwan. और वो एक जब स्प्लिट की बात की जाती है, although they have never officially announced, but the tendency is increasing. So obviously जब ताइवान के अंदर एक increase demand, increase tilt बनेगी towards independence, China would react to it. And that is why this recent crisis and the recent visit by the US House Speaker Nancy Pelosi should be seen in the same context. Although internationally कोई मेजर पावर ताइवान को एज अ सेपरेट स्टेट नहीं मानती, यूनाइटेड स्टेट्स नहीं मानता, यूरोपियंस नहीं मानते, मेजर पावर्स कोई भी नहीं मानती, मेजर स्टेट्स कोई भी नहीं मानती, लेकिन फियर ये है दैट दे माइट शिफ्ट देयर पॉलिसी एंड दे माइट बी एनकरेजिंग इन फैक्ट फॉर ताइवान
to go for its independence. अब नाजरीन थोड़ा सा देख लेते हैं कि हिस्टोरिकली यूएस की पॉलिसी क्या रही है. Since China was born in the early years of the Cold War, and because China initially was जो PRC है, People's Republic of China, it was ruled by the communists. तो United States initially didn't recognize this Communist Party's government in mainland China. और हम देखते हैं कि यूएस डिस्पाइट द फैक्ट कि जो ताइवान की गवर्नमेंट है वो ओवरऑल चाइना पे क्लेम करती थी, बट इट हैड अ वेरी स्मॉल एरिया अंडर इट्स कंट्रोल. यूएस स्टिल रिकग्नाइज द ताइवान एज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ चाइना इवन इन द यूएन एंड बायलैटरल सेटिंग्स. बट 1970s में हमने देखा दिस पॉलिसी शिफ्ट टेक प्लेस एंड यूएस रिकग्नाइजेज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एंड द मेनलैंड चाइना एज द ट्रू चाइना. एंड ताइवान की जो स्टेटस था, इट वॉज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी अ स्टेट और रिकग्नाइज एज इंडिपेंडेंट स्टेट और टू रिप्रेजेंट द मेन चाइना. तो यूएस पॉलिसी शिफ्ट 1970s में जब आता है, उसी के नतीजे में हमने देखा कि चाइना को यूएन की मेंबरशिप मिलती है ताइवान की जगह पे, और उसी बिहाफ पे सिंस देन हम देखते हैं कि यूएस इंगेज करता है चाइना को. लेकिन 1970s में जब यूएस चाइना की गवर्नमेंट को रिकग्नाइज करता है, तो उस रिकग्निशन में वह जहाँ पे ताइवान की गवर्नमेंट को रिकग्निशन नहीं दी जाती और चाइनीज़ गवर्नमेंट को रिकग्निशन दी जाती है, वहीं पे यूनाइटेड स्टेट्स कंटिन्यू टू कमिट एट दिस पॉइंट, और उस एग्रीमेंट में भी है दैट दे एनकरेज चाइना दैट दे कैन गो फॉर यूनिफिकेशन ऑफ चाइना बट नॉट थ्रू वायलेंस बट रादर थ्रू पीसफुल मीन्स. और उसी कॉन्टेक्स्ट में नाजरीन ताइवान को उस एग्रेशन से बचाने के लिए, पॉसिबल एंटिसिपेटेड एग्रेशन से बचाने के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स कंटिन्यू टू हैव सम डिफेंस रिलेटेड एंगेजमेंट्स विद ताइवान. लेकिन कोई हाईएस्ट लेवल पे ये एंगेजमेंट्स बहुत कम थी, बिकॉज ताइवान इज़ नॉट रिकग्नाइज एज स्टेट. सो हाईएस्ट लेवल पे डिप्लोमेटिक जो एंगेजमेंट्स थी दैट वर नॉट सीम टू बी फीजिबल एट दैट टाइम. बट ऑब्वियसली नाजरीन चेंजिंग सर्कमस्टांसेस हैं, थिंग्स चेंज, और अब हम इसी पे आने लगे हैं कि जो रिसेंट विजिट था नैन्सी पेलोसी का, हाउ दिस क्राइसिस अनफोल्डेड और इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे. तो नाज़रीन नैन्सी पेलोसी ने अगस्त 2022 को विजिट किया ताइवान का, बट इट वाज नॉट एन अनअनाउंस्ड विजिट, इट वाज अनाउंस्ड बिफोर हैंड. और व्हेन इट वाज अनाउंस्ड तो चाइना एट दैट टाइम वार्न्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द कंसिक्वेंसेस ऑफ दिस विजिट. बट नाज़रीन क्या ये अनप्रेसिडेंटेड विजिट है? ऐसा नहीं है. इन 1990s हमने देखा कि उससे पहले भी यूएस हाउस स्पीकर जो हैं वो विजिट कर चुके हैं, एंड नैन्सी पेलोसी इज़ आल्सो द हाउस स्पीकर एंड अ काइंड ऑफ रिटायरिंग हाउस स्पीकर एट दैट टाइम, जो अब नहीं है, शी इज़ रिप्लेस्ड बाय रिपब्लिकन्स नाउ. तो वो उनका जो विजिट था वो अनप्रेसिडेंटेड तो नहीं था, बट विजिट तो था. एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट चाइनीज़ हैव वार्न्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ दिस विजिट, शी वेंट अहेड विद दैट. And American administration led by Joe Biden did not oppose it, although they said they are not part of this decision to visit Taiwan, but they won't oppose it either. तो क्यों विजिट किया गया नैन्सी पेलोसी की तरफ से, जो डेमोक्रेट हैं एंड जो बाइडन भी प्रेसिडेंट हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो दोनों एक पार्टी से हैं. प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि उन्होंने इस विजिट के वाले से कंसल्टेशन उनसे नहीं की गई, बट ही डिड नॉट अपोज इट ईदर. क्यों विजिट किया? स्कॉलर्स उसको डिफरेंट तरह से देखते हैं. वन ऑफ द रीजंस गिवन इज़ कि चूँकि अमेरिका के अंदर 2022 नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस होने थे, जिसमें हाउस सेलेक्ट होना था, जिसकी वो स्पीकर भी थी, उनकी अपनी पॉलिटिकल कैरियर एट स्टेक था. फिर इसी तरीके से फियर ये था कि उस इलेक्शन में एक रेड स्केयर का फियर था कि रिपब्लिकन्स माइट डोमिनेट, और उसको काउंटर करने के लिए दे नीड टू बिल्ड अ नैरेटिव. तो कुछ स्कॉलर के नज़दीक ये एक पॉलिटिकल स्टंट था ऑन द पार्ट ऑफ हाउस स्पीकर टू गेट अ परसेप्शन दैट डेमोक्रेट्स आर करेजियस, ब्रेव at the face of threats by the rivals and adversaries like China. Second, नाजरीन जो रीज़न साइट किया जाता है डिफरेंट स्कॉलर्स की तरफ से, में से एक रीज़न ये था कि नैन्सी पेलोसी का जो विजिट था, इट वाज बेस्ड ऑन आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशंस, बिकॉज शी बिलोंग टू डेमोक्रेटिक पार्टी, एंड डेमोक्रेटिक पार्टी boasts itself as a party that has belief in and which does not shy away from its core principles of liberalism, idealism, openness, and that it stands up to the challenges posed by the authoritarian regimes. So this Nancy Pelosi visit is considered to be just another sign that Democrats stand up to any authoritarian challenges that come on their way. Another explanation नाज़रीन जो दी जाती है वो रशिया यूक्रेन वार के लिंक से की जाती है. रशिया इन्वेडेड यूक्रेन इन 2022 मार्च, और उस इन्वेजन के बाद बहुत सारे स्कॉलर्स जो इंटरनेशनल लेवल पे हैं, इंटरनेशनल एस्टेब्लिश्ड स्कॉलर्स हैं, दे
kind of created a scenario that this Russia's invasion of Ukraine could be a kind of opportunity for other 13 states like China to use it as an opportunity and capture or reunify the Taiwan with the mainland China. And China might go for a misadventure. और उस threat perception को counter करने के लिए Americans had to show that they stand with Taiwan. Although there were many statements in which they have threatened that if China invaded Taiwan, there would be problems. But हमने देखा कि कहीं न कहीं पे ये जो visit था, this was the first practical indication of how the US stands with Taiwan at the face of the threats from China, which were assumed by the West, keeping in mind the Ukraine war. Another reason, नाज़रीन, जो कहा जाता है, that is some scholars suggest that this visit was with the tacit blessing of the Biden administration, who had recently changed its stance towards Taiwan. Now, historically, American policy was vague, defense policy was vague vis-a-vis Taiwan. The Congress had passed a law in which said that they would provide assistance, defense assistance to Taiwan in case of its conflict with the Chinese. But they never elaborated what kind of defense collaboration US will be engaged in case the war breaks out, in case the Chinese decide to invade and use military to capture Taiwan. But in 2022, Joe Biden has been very expressly, initially in short term, but ultimately in very, very expressive terms, he had stated that US will be having a military option to respond to Chinese invasion of Taiwan. In other words, US said it will be militarily engaging China in case it threatens Taiwan or it invades Taiwan. And this threat was supplemented by this highest level visit that had happened since 1997. 97 के बाद ये पहले मेजर लेवल पे एक जो विजिट है, तो it corresponds to the same kind of change of policy by the Biden administration. अब नाज़रीन आते हैं how China responded to it. China के जो responses थे नाज़रीन, China had to respond in two ways. One, it had to respond to Taiwan for inviting Nancy Pelosi, and second, China had to respond to the US provocation. On both counts हम देखते हैं कि China का response जो है वो बड़ा calculative but still assertive response. On Taiwan, what China did was, जो कि शायद China का सबसे major response भी था, they announced an unprecedented military exercises around Taiwan. So from 6 sides of Taiwan, from different directions, China conducted live military drills, जो कि ये unprecedented थी. And during those drills, some of the missiles entered into the Taiwan's airspace just a few dozen kilometers from the main territory of Taiwan. नाज़रीन, अगर हम इसको मैप पे देखें तो आपको लगेगा कि जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं, they were like surrounding or besieging Taiwan from the seaside. And some scholars suggested that these exercises, इसमें ताइवान की अपने ऑफिशियल भी शामिल हैं, they suggest that these exercises were actually a kind of exercise for a possible naval blockade in case China decides to invade Taiwan. तो ये naval blockade को imitate किया गया, उसकी एक्सरसाइज की गई उस हवाले से. So it was not just a response to the visit, it was a very well planned and pre-planned initiative by China to strengthen its military strategy for invasion of Taiwan. Besides, China started announcing some sanctions on Taiwanese companies. कुछ sanction भी लगाएंगी ताइवान कंपनी के ऊपर. और उसके बाद से हमने देखा Chinese military had significantly increased its what Taiwan called the breach of its air identification zone. Unprecedented जो है breach हमें देखते हैं Chinese एयर फोर्स की तरफ से, चाइनीज़ फाइटर जेट्स की तरफ से और उनकी नेवल शिप्स की तरफ से इन द ताइवान्स डिफेंस जोन. vis-a-vis यूनाइटेड स्टेट्स, नाज़रीन, हम देखते हैं दैट चाइना हैज़ इंक्रीज्ड द थ्रेट्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स. बिफोर द विजिट दे सेड दैट चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने कहा था दैट आवर मिलिट्री विल नॉट स्टैंड आइडल टू दिस अमेरिकन प्रोवोकेशन. और हमने देखा कि मिलिट्री ने तो अमेरिकन के बिहाफ पे कोई मेजर एक्शन नहीं लिया, बट चाइना अनाउंस्ड to suspend and cancel certain different level engagements
विद द यूनाइटेड स्टेट्स। उनमें क्लाइमेट टॉक्स भी शामिल थी, उनमें और भी टॉक्स शामिल थी जिसके अंदर क्लाइमेट के अलावा स्मगलिंग के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, ड्रग ट्रैफिकिंग के ऊपर कुछ इश्यूज थे जिन पे उनकी टॉक सस्पेंड कर दी गई। Although climate-related talks have been recently resumed after Xi Jinping and Biden they carried out a telephonic conversation for more than 2 hours. But at that time, they were suspended. So China's response was more calculative. They didn't cross the red lines, but they did show to the United States that it is very concerned. And if such a crisis happens again, the US response will not go unresponded. अब नाज़रीन आते हैं इस क्राइसिस की इम्प्लीकेशंस क्या हुई। ये नैन्सी पेलोसी का विजिट तो हो गया, इट एंडेड एंड चाइना रिस्पॉन्डेड, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या हुई। नाज़रीन, वन ऑफ द मेजर implication is that all parties now understand that military conflict seems to be more imminent than before. This crisis showed that none of the parties is willing to back down, and therefore एक insecurity का जो environment है इस region में, it has significantly increased because of this crisis. सेकेंड मेजर इम्प्लीकेशन नाजरीन जो हो सकती है वो है इस रीजन में इस इंसिक्योरिटी की वजह से एक आर्म्स रेस डेवलप हो रही है, और ये आर्म्स रेस इतनी सिग्निफिकेंटली ग्रो करेगी बिकॉज ताइवान इज लाइकली टू इंक्रीज इट्स आर्मामेंट फॉर इट्स सिक्योरिटी। रीजनल स्टेट विल बी फीयरिंग दैट दिस वॉर would compromise their own security. China would feel that it is being threatened and it would likely to grow its arms capabilities, and the United States is likely to also increase military capabilities and military deployments in the region. इसी कॉन्टेक्स्ट में नाज़रीन हम देखें तो रीजनल स्टेट्स के अंदर भी हमें डिवीजन नजर आती है। बहुत सारी स्टेट्स ओपनली ताइवान का साथ देती हैं, यूनाइटेड स्टेट्स का साथ देती हैं। कुछ स्टेट्स जो हैं वो कॉशियस अप्रोच रखती हैं एंड दे आस्क द कॉन्फ्लिक्ट नॉट टू बी एस्केलेटेड एंड दे आस्क बोथ पार्टीज टू शो रिस्ट्रेंट। तो रीजनल पोलराइजेशन, रीजनल जो पॉलिटिकल डिवीजन्स हैं, दे आर लाइकली टू इंक्रीज एज वेल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट नाजरीन, क्लाइमेट रिलेटेड जो इम्पैक्ट्स हैं वो भी सिग्निफिकेंटली बढ़ रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस हमने देखा कि ताइवान, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स में क्लाइमेट टॉक सस्पेंड हुई। हम लास्ट एपिसोड में क्लाइमेट चेंज पे बात कर चुके हैं, जिसमें बताया कि किस तरीके से इट हर्ट द COP27 मीटिंग एज वेल। नाज़रीन, टू कंक्लूड दिस एंटायर डिस्कशन, हम ये कह सकते हैं दैट दिस ताइवान क्राइसिस वाज एन एडवेंचर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स साइड और फ्रॉम चाइनीज साइड इट वाज अ मिस एडवेंचर। बट in any case, that this visit showed that this is not the last provocation, this was not the first provocation, and this is certainly not the last provocation that US has on Taiwan. It also showed that US commitment with Taiwan is unwavering and it is solid. But China's response also showed that it is not going to bog down by the US provocations and it will respond in different ways. But this crisis also showed one thing, Nazreen, कि जो दोनों पार्टीज़ हैं और स्पेशली चाइनीज़ जो हैं, दे प्रूव टू बी मोर रैशनल, मोर कैलकुलेटिव, डिस्पाइट द फैक्ट दैट यूएस हैज़ कंटिन्यूसली बीन ब्लेमिंग चाइना फॉर बीइंग रॉग स्टेट और इंक्रीजिंगली गेटिंग टुवर्ड्स द रॉग बिहेवियर. China's calculative diplomatic and military response against Taiwan was something that showed that China is a responsible power, and it is likely that China would like to avoid war in this region, because this war does not suit anybody's interest, especially the regional states including Pakistan. आज के लिए नाज़रीन इतना ही. Kindly like this video, share it and subscribe this channel. Allah Hafiz.